हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसका यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट नंबर 2 कराने जा रहा हूं। तो गाइस, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस कैसे होता है, क्या होता है ये चीज़। ठीक है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस to understand how a consumer reaches equilibrium in case of a single good. It states that as the quantity of the good with the consumer increases, mu of the मतलब marginal utility of the good decreases. To understand consumer equilibrium, we have to understand single commodity case. We shall know marginal utility of money, price of the commodity, marginal utility of the commodity. Because consumer equilibrium struck when m is equal to mux upon px, मतलब marginal utility of money shall be equal to marginal utility of x commodity upon price of that commodity. ठीक है गाइज। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता वन कमोडिटी केस में। और उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, बिकॉज इफ मार्जिनल यूटिलिटी changes or price of x changes, the level of satisfaction also changes with every change, because for his optimum utilization to equate he has to change the consumption of the commodity. अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। इन रियलिटी अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन मोर देन वन गुड. In such cases, consumers equilibrium with the law of equ marginal utility. According to this law, the consumer will be in equilibrium when he spends his income on different goods and services in such a way that marginal utility of each good is proportional to its price, and the last rupee spent on each commodity yields him equal marginal utility. The law states that consumer is in equilibrium when the following condition is met. और वो क्या है कि marginal utility of x upon price of x shall be equal to marginal utility of y upon py shall be equal to marginal utility of money. ठीक है जी। तो ये हमारा टू कमोडिटी केस है कि इक्वेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्शल ने इस कंसेप्ट को दिया था। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली excess of the price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay is called consumer surplus. Thus consumer surplus क्या हुआ, what a consumer is ready to pay minus what he actually pays. So it is a welfare concept. It measures the benefits buyer receive from the participating in the market. The concept is derived from the law of डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस आएगा कमोडिटी 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी 30 28 26 24 22 20 and 10, प्राइस ऑफ 20 20 20 20 20 एंड कंज्यूमर सरप्लस 10 8 6 4 2 0 1। ठीक है जी। ओके गाइस, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं application. The concept of consumer surplus has important practical application. For such applications are listed below. Consumer surplus is a measure of the welfare that people gain from consuming goods and services due to surplus. Consumers likely to repeat their purchases. ठीक है जी। और उसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इफ अ बिजनेस कैन आइडेंटिफाई ग्रुप of consumers with different elasticity of demand within their market and the market segment which are willing and able to pay higher prices for the same product, then firms can use price discrimination. Number 3, large scale investment decisions involve cost benefit analysis which takes into account the extent of the consumer surplus with the project may fetch. एंड फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, कंज्यूमर्स हु enjoyed only a small amount of surplus may no longer be willing to buy products at higher prices. Firms making such decisions should expect to make fewer sales if they increases prices. एंड इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है गाइस,
consumer surplus usually act as a guide to finance ministers when they decide on the products on which the taxes have to be imposed. और उसके बाद हम limitations को डिस्कस करें कंज्यूमर सरप्लस के केस में. कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली बिकॉज it is difficult to measure the marginal utility of different unit of commodity consumed by a consumer. In case of necessaries, the marginal utility of earlier units are infinitely large. तीसरी लिमिटेशन है surplus cannot be measured in terms of money because the marginal utility of money changes as purchases are made and the consumer stocks of money diminishes. There is no simple rule for deriving the utility scale of articles which are used for their prestige value. Fifth, the consumer surplus derived from a commodity is affected by the availability of the substitutes. And the sixth limitation क्या है? Modern economists believe that marginal utility can be measured in terms of money. तो गाइज ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है जी, तो इसलिए मेरे चैनल को कीप वॉचिंग. ओके जी, गुड लक.